So, students, today I'm going to start the third module. Okay. Today I'm going to start the third module, that is the illumination system. You can see the syllabus that I have shared. Okay. It is visible to all of you. Yes, sir. Okay. So, as you can see that in the third module, illumination system, we have to cover different illumination related electrical equipment, basically, you can say. Okay. So what are the basic terms that are related with the illumination system? Okay, like what is light, lumen, intensity, candela power, lamp efficiency. Okay, all these terms which are associated with the illumination system, that we will see the definition, what is the meaning of these words. Okay, in the area of this illumination. After that, we have to go through the detailed construction and the operation of different electrical equipment what we are using for the illumination purpose, like incandescent bulb, okay, the fluorescent tube, CFL, LED. So we will discuss about the construction and the operation, how they are operating, what are the different components of these electrical equipments which we are using for the illumination purpose. Okay. After that, we will talk about the energy saving schemes and how we will design a lighting scheme for a residential and commercial premises. So we will see that if this is the area of a room, then what should be the size of the illumination equipment that we will use so that we will get proper illumination of this much intensity. Like that, we will calculate using a standard procedure in order to find out, or you can say in order to design a lighting scheme for a particular premises. Okay, and at the end we will discuss about the flood lighting system also. Okay, so these things we have to cover in this third module. Okay, so starting with the various terms that are related with the illumination system. Okay, I will start with this one. Before moving to the definition part of the different terms, first of all, anyone of you tell me what is illumination? Okay, what is the meaning of this word illumination? Illumination वर्ड अगर जब हम लोग कहते हैं तो उसका क्या मतलब, कुछ चीज तो एज्यूम करते होंगे ना, इसका क्या मतलब है, क्या समझ में आता है इससे? Anyone of you? इल्यूमिनेशन कहने का क्या मतलब समझ में आता है अगर वर्ड यूज करते हैं तो? इन जनरल कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. सर टू लाइट लाइट से रिलेटेड होता है सर, टू थ्रो Okay. लाइट अपॉन इस तरह से, मतलब लाइट का जनरेशन या लाइट का प्रोडक्शन एक तरह से कर सकते हैं. Okay. You mean it is something related with light? Okay. So is there any difference between light and illumination, or both are same? ये चीज आएगा ना माइंड में, whether the illumination and light both are same or different. लाइट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं लाइट को? अलग अलग तरीके डिफाइन करने के. okay. जैसे लाइट के लिए हम लोग क्या कहते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज लाइट?
Light is a form of energy. Yes, sir. Okay. Light is a form of energy which can be radiated like heat energy. Okay. और इसका दूसरा भी definition होता है. It is the heat energy. ठीक है ना? अलग अलग तरीके इसको डिफाइन करने के. तो इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं, अगर लाइट और इल्यूमिनेशन को समझना हो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये क्या चीज है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट इज कॉज एंड इल्यूमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ लाइट. लाइट इज कॉज एंड इल्यूमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ लाइट. बोथ आर नॉट द सेम थिंग, बोथ आर डिफरेंट. इल्यूमिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लाइट. लाइट क्या है? कॉज है, एक रीजन है. ठीक है, बल्ब जलाए, that will produce light, and illumination is the result of light. okay? बल्ब जलाने के बाद जो लाइट प्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद जो भी प्रेमिसेस है, जो भी रूम है, वहां जो भी चीजें रखी हुई है, उसके ऊपर वो लाइट इंटेंसिटी आता है, तो फिर उन चीजों को हम लोग साथ ही देख सकते हैं. ठीक है, दैट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द लाइट. व्हेन वी विल switch on the bulb, then it will illuminate. Okay, there is some basic difference between this light and illumination. एक लाइट का और भी डेफिनेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं, it is defined as the radiant energy from a hot body causing visual sensation upon the human eye. बहुत सारे तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, हम लोग पढ़े ही होंगे ये सब चीजों को स्कूल में भी और +2 में भी. रेडिएंट एनर्जी क्या होता है? रेडिएंट एनर्जी मीन्स बेसिकली कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सब चीजों के बारे में पढ़ी हो. okay? The transfer of heat from one form to another form. okay? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो इन सब चीजों के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट हो सकता है. तो बेसिक सिर्फ याद रखो कि light and illumination both are the different things. Light is the cause and illumination is the result of light. ठीक है ना? इसके अलावा और भी चीजों से फैमिलियर हो गई. व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर्स. तो इन सब चीजों के बारे में फैमिलियर हो. वो सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन सब चीजों का कुछ टर्म्स यूज होंगे जब कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे, या इन चीजों को समझने में भी आगे इन सब टर्म्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा. ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं डेफिनेशंस क्या क्या है. तो लाइट के बारे में हम लोग देख ही लिए. लाइट क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी रेडिएटेड लाइक heat energy, or we can say that it is the heat energy itself which can be converted into the light energy. ठीक है, अब एक टर्म आता है हमारा luminous flux. okay, what is luminous flux? Luminous flux, it is defined as the total quantity of light energy which is emitted per second
from a luminous body in the form of light wave. ठीक है, definitions को तुम लोग समझ लो, नोट करने की जरूरत नहीं है. I will share the notes. Okay, don't worry for that. Try to understand the meaning of these words. Okay, so luminous flux, it is defined as the total quantity of light energy emitted per second. Okay, total quantity of light energy emitted per second from a luminous body. Luminous body क्या हो सकता है हमारा? Either it may be CFL, LED, bulb, tube light. Okay, so that is luminous body. And if we will switch on a bulb, then the light energy which is emitted per second from the bulb, okay, that is luminous flux. In the simple language, you can understand in this way. Okay, its unit is lumens, and it is denoted by F, or sometimes it is denoted by phi. So you can see that this phi is equals to Q divided by T, where Q is what? It is the light energy which emits in a particular time divided by time in hours. Okay, so this is luminous flux. I think you have already gone through these terms. इन सब चीजों के बारे में तो पहले भी पढ़े ही होगे ना, जब लाइट के बारे में पढ़ रहे होगे +2 में. Yes, So sir. I don't think that it will be much more difficult to understand these terms. Okay, कुछ terms है जो कि नए होंगे, ठीक है, तो उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, so this is about the luminous flux. इसके बाद दो टर्म आते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. व्हाट इज प्लेन एंगल एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल? तो इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझ सकते हो. जैसे कोई एक रूम है, ठीक है, ये अपने घर में भी देखते होगे, किसी कमरे में सुबह के समय में अगर खिड़की में कोई एक होल हो छोटा सा, और सुबह सुबह जब सनलाइट आता है उस खिड़की के थ्रू, तो फिर देखते हो ना, उस होल के थ्रू जब अंदर कमरे में अंधेरा रहता है और जब सनलाइट आता है तो एक स्ट्रेट लाइन आता है बिल्कुल, और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब दिखाई देते हैं अलोंग द लाइट, जो भी सनलाइट आ रहा है उस होल के थ्रू, विंडो में जो होल है. देखे हो ना इन चीजों को, एनालाइज किए होगे कभी? Yes, sir. Yes. तो अगर उसको 2 डायमेंशनल प्लेन पर प्रोजेक्ट करो और उसको ड्रॉ करो अगर बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन होगा. ठीक है, ये देख रहे हो, कुछ इस तरह का ये प्रोजेक्शन होगा. या किसी टॉर्च को भी अगर ऑन करो अंधेरे में, तो उसका भी फोकस कुछ इस तरह से होगा. टॉर्च को इस तरह से हम लोग रखते हैं तो इसका फोकस कुछ इस तरह से होगा. ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो. इसी को अगर 3 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह का आएगा कुछ. ठीक है, तो ये जो एरिया होगा 2 डायमेंशनल में, ठीक है, आर्क, that is called arc, you know. Okay, and this is the radius r, और इनके बीच में जो एंगल होगा that is called theta. ठीक है, so plane angle क्या हो गया? Plane angle is subtended at a point in the same plane. Okay, in the same plane, that is why I'm talking about 2-dimensional plane. Okay, by 2 covering lines. These are the 2 covering lines. Angle is measured in radian or degree. Okay, so theta equal to arc divided by this radius. Okay, if L is the length of this arc,
it is very similar to the straight line. Okay, not exact straight line, but you can consider a little bit of a straight line. So if L is the length of this arc and R is the radius, so theta equal to L by R, and its unit is radian. And you know about that radian and degree relation, that 1 radian equal to 180 by pi degree. Okay, कैसे आता है ये थीटा इक्वल टू L by R, ये भी पढ़े हो तुम लोग, ठीक है. Simple mathematics है, 2 pi R divided by L equal to 360 by theta, and when you solve it, then you will get theta equal to L by R. So this is called a plane angle if we talk about in two-dimensional plane, and the same thing if we talk about in three-dimensional plane, then it is called the solid angle. ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग इस आर्क को स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर कर रहे थे, अगर इसको थ्री डायमेंशनल प्लेन में देखा जाए, so that is not a straight line. Okay, it is like a circle. ठीक है ना. So solid angle, it is defined as, it is the angle generated by the line passing through the point in space. This is the point. Okay, so passing through the point in space and the periphery of the area. ठीक है, या इसको और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से. A solid angle enclose a volume by an infinite number of lines lying on a surface and meeting at a point. Okay? Solid angle को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, and that is equal to area of this sphere divided by radius square. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, arc divided by this radius, ठीक है, this arc length, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये थ्री डायमेंशनल में है तो इसलिए हम लोग इसके एरिया को कंसिडर करते हैं. सो एरिया ऑफ दिस स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. ठीक है, सो दैट इज 4 pi r square divided by r square, and the final value of this omega solid angle is 4 pi, and its unit is steradian. Okay, ये सब चीज तो पढ़े ही हो ना पहले. Yes, sir. Okay, the next term is the luminous intensity. Okay, luminous intensity in any particular direction is the luminous flux emitted by per unit solid angle. Okay. It is the luminous flux emitted by per unit solid angle. Luminous flux को हम लोग किससे डिनोट करते थे, either F or phi. So it is F divided by omega per unit solid angle. Solid angle is omega, so it is F divided by omega, or we can write it as phi divided by omega. So that is luminous intensity, flux divided by this solid angle. Okay, so this luminous intensity is, the unit of this luminous intensity is lumens per steradian. Okay, lumens is the unit of this luminous flux and steradian is the unit of solid angle. So it is lumens per steradian, or we can also call it as candela. Okay, the unit of luminous intensity is candela. ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर सॉलिड एंगल डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है तो luminous intensity क्या होगा, either it will decrease or increase. Okay, so once you know the definition, the meaning of this luminous intensity, then you can answer it also. Okay, when omega will decrease, then
luminous intensity will increase, or vice versa. Okay. Moving to the next term, lumen. Lumen क्या है? Lumen, it is defined as the amount of luminous flux given out in space by a source having an intensity of 1 candela power in all direction. Okay, इसके words पे ध्यान देना. Lumens is defined as the amount of luminous flux given out in space. स्पेस में कितना luminous flux रिलीज हो रहा है, ठीक है, बाय अ सोर्स. कोई एक सोर्स है, वो स्पेस में कितना luminous flux एमिट कर रहा है, ठीक है, और उस सोर्स का इंटेंसिटी क्या है? 1 कैंडिला पावर. ठीक है, एक सोर्स है जिसका की इंटेंसिटी है 1 कैंडिला पावर, वो स्पेस में कितना luminous flux इल्यूमिनेट कर रहा है in all direction, that is called lumen. Okay, if we switch on a bulb and the intensity of bulb is 1 candela power, suppose the intensity is 1 candela power of a bulb, then it will illuminate and it will disseminate the luminous flux in all direction in the space. Okay, so that is called lumen. ठीक है, so lumen is equal to candela power into solid angle. Okay, so the next term is candela power. So अगर lumen को define कर दिए तो हम लोग candela power को भी define कर सकते हैं. Lumen क्या था हमारा? Lumen equal to candela power into solid angle. So candela power is lumen divided by solid angle. There is nothing new. Okay, just the language will be changed little bit. It is defined as the light radiating capacity of a source in a given direction and is defined as number of lumens given out by the source in a unit solid angle in a given direction. ठीक है, so एक basic difference क्या है? Lumen is defined for all direction. ल्यूमेन का डिफिनेशन अगर देख रहे होगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? 1 कैंडेला पावर का अगर कोई सोर्स है, ठीक है, वो कितना ल्यूमिनस फ्लक्स डिसमिनेट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन. सो ल्यूमिनस इज टॉकिंग अबाउट ऑल डायरेक्शन, बट कैंडेला पावर is defined for a given direction, for a particular direction. ठीक है, it is defined as the light radiating capacity of a source in a given direction. So basic difference यही है कैंडेला पावर और ल्यूमेन में. Otherwise things are same. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इसके बाद 3 टर्म्स आते हैं. तीनों टर्म काफी कुछ सिमिलर है. एक होता है हमारा MSCP, मीन स्फेरिकल कैंडिला पावर, MSCP. दूसरा टर्म होता है MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडिला पावर. और तीसरा टर्म होता है MHSCP, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडिला पावर. तीनों टर्म में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. क्या है?
इन तीनों टर्म में देखो। फर्स्ट है हमारा मीन स्फेरिकल कैंडेला पावर, MSCP. It is defined as the average of candela power in all direction. Okay, it is talking about in all direction. Point to be noted. It is defined as the average of candela power in all direction and in all planes from the source of light. अगर एक लाइट सोर्स है वो ऑन एन एवरेज कितना कैंडेला पावर इल्यूमिनेट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल प्लेन्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय MSCP, मीन स्फेरिकल कैंडेला पावर. ओके, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं MSCP इक्वल टू टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेंस डिवाइडेड बाय 4 पाई. Okay, why 4 pi? Because it is the maximum value of the solid angle. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्यों ले रहे हैं? Because it is talking about the all direction and in all planes. Okay, in all direction, in all planes. So we need to take the maximum value of the solid angle so that it will cover the complete area. Okay, so MSCP is total flux divided by the maximum value of solid angle, that is 4 pi. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल भी देख रहे हो यहाँ पर दिखाया गया है. एक बल्ब है, बल्ब कुछ इस तरह का है सेट. जब इस बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो क्या करेगा ये? इट विल इल्यूमिनेट लाइट इन ऑल डायरेक्शन. बट नॉर्मली क्या होता है, इस बल्ब को अगर कहीं हम लोग होल्डर में लगा करके रखते हैं तो फिर अगर ध्यान दिए होगे तो इस जो होल्डर के साइड का एरिया है वहां पर इल्यूमिनेशन, लाइट का इंटेंसिटी वहां पर थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द फ्रंट साइड ऑफ द बल्ब. होता है ना? So we need to take the average of all the luminous intensity of all the illumination. ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज इसका जो luminous intensity है यहाँ कुछ कम होगा, इसका फ्रंट में ज्यादा होगा. ठीक है, तो अलग अलग सरफेस अलग अलग डायरेक्शन में ये हमारा लाइट यहाँ से एमिट हो रहा है. डिफरेंट डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन. ठीक है, सभी डायरेक्शंस में लाइट एमिट कर रहा है और हर डायरेक्शन में क्या है, इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी हमारा जो है वो भी हमारा डिफरेंट है. ठीक है, तो फ्लक्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज में है. सो वी नीड टू टेक द एवरेज. दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग, it is defined as the average of candela power in all direction and in all plane from the source of light. Clear? अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा टर्म, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडेला पावर, MHCP. It is average of all the candela power in all direction. जहां तक तो डेफिनेशन सेम है, it is average of all the candela power in all direction. Okay, but चेंज क्या है, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. जबकि MSCP में क्या था, इन ऑल प्लेन, और यहाँ पर सिर्फ क्या है, चेंज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है ना? सो अगर उसी एग्जांपल को हम लोग फिर से लेते हैं, उस बल्ब को हम लोग अगर इस तरह से वर्टिकली रख करके, ठीक है, और उसके बाद स्विच ऑन करते हैं, या किसी एक टॉर्च को यहाँ पर वर्टिकली रखते हैं और फिर स्विच ऑन करते हैं, तो ये लाइट तो इमिट करेगा हर एक डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल प्लेन्स. ओके, बट वी नीड टू consider the value of the candela power, the flux which is above the horizontal plane. Okay, if this is considered as the horizontal plane, so what is the value of the flux which is illuminating above this horizontal plane? That we will count
for calculating the value of mean horizontal candela power. Okay, that is the basic difference between mean spherical candela power and mean horizontal candela power. Okay, MSCP was talking about in all plane, and MHCP is related with the horizontal plane only. The third term is mean hemispherical candela power, MHSCP. It is defined as the average of candela power in all direction. ठीक है, यहाँ तक definition same है. Again, it is defined as the average of candela power in all direction above or below the horizontal plane. Okay, above or below. So either you can consider above or you can consider below. Okay, so it is hemispherical. If you consider any one direction, so it will be like a hemispherical area. Okay, if we consider the bottom side also below the horizontal plane, then it is like a hemispherical. Okay, so that is why it is the mean hemispherical candela power. It is defined as the average of candela power in all direction above or below the horizontal plane passing through the source of light. ठीक है, तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ गए ना, MSCP, MSCP and MSCP. सर हेलो हाँ, सर बोले ना MHCP में सर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेना है या एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना है? consider either above or below the horizontal plane. सर MHCP. MHCP. Yes, sir. MHCP में above the horizontal plane. सर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेना है ना, मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा वो एबव नहीं लेना है ना सर? सॉरी, हेलो MHCP along the horizontal plane and MHCP either above or either below the horizontal plane. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, यस सर. ठीक. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म, रिडक्शन फैक्टर एंड रिफ्लेक्शन फैक्टर. Reduction factor is related with the three terms what we discussed above. Okay, it is defined as the ratio of MSCP to MHCP. Okay, mean spherical candela power divided by mean horizontal candela power. इन दोनों के रेशियो को हम लोग रिडक्शन फैक्टर कहते हैं. ठीक है, तो अगर कोई न्यूमेरिकल होगा जिसमें कि बाकी सारे पैरामीटर्स दिया हुआ होगा, so you can easily find out the reduction factor also. Okay, now the reflection factor. What is this reflection? Reflection factor, it is defined as the ratio of reflected light to incident light. Okay, what is this reflected light and incident light? What is the difference between them? किसी बल्ब को जब स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है, या जो सन से लाइट आ रहा है, ठीक है, थ्रू एटमॉस्फेयर होते हुए हमारे तक आ रहा है, तो सन से जितना भी लाइट आ रहा है उसकी जो भी इंटेंसिटी है, फुल इंटेंसिटी हमारे तक नहीं पहुंचती है ना. ठीक है, जब तक हमारे पास सनलाइट पहुंचता है उस बीच में एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में, और कुछ लाइट हमारे तक पहुंचती है. ठीक है, सो ये वही कह रहा है
It is the ratio of the reflected light divided by the incident light. कितना light reflect हो गया, and what is the light, but what is incident to us. ठीक है? So the ratio of the reflected and the incident light will define the reflection factor. Okay? कुछ values भी यहाँ पर mention किया मैंने. For example, in case of the mirror, the reflection factor is 0.8 to 0.85. ठीक है? अगर मिरर के सामने किसी लाइट को ऑन करते हैं तो फिर क्या होगा, कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ लाइट हमारे तक पहुंचती है, इंसिडेंट होती है. ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन फैक्टर 0.8 है. ये सब चीजें फिजिक्स में भी पढ़े ही होंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. Next term is lamp efficiency. It is simple. What is the efficiency? Output by input. ठीक है, तो किसी भी लाइट सोर्स से जो भी लाइट हमारा आउटपुट क्या होगा, जो भी ल्यूमेंस बेसिकली यहाँ से एमिट हो रहा है किसी लाइट सोर्स से, ल्यूमेंस एमिटेड बाय अ सोर्स.